यहाँ पर वेट कर रहे हैं अभी घोड़ा गाड़ी का। ये देखो है ना छोटी सी ची 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 Say that about my colleagues. First of all, welcome to Ballarat, everyone. Ballarat is a Wathaurong word meaning resting place. Wathaurong, traditional custodians of this land. For about 60,000 plus years they were here, and the land provided them with food, drink, shelter, clothes, tools, the works. August 1851. Up the road in Buninyong, down the road in Clunes, round the corner Golden Point, people started to discover gold. And in about 6 months we've got 30,000 plus people here, all trying to make a fortune. You're going to need a police force. The reason I say this is because up until 1851 there was no such thing as a regional police force. Anything up and out in the country, out in the bush, sent to Geelong or Melbourne. Shark skin on the handle, when it rains that will not fall out of my hand. It's what we call a cutting or a slashing weapon. We're on top of our horse. Can I see your license? So I'm going to tell you when to take cover and cover your ears, young man. I'm not going to shoot it off without warning folks. Because someone has to clean up the mess and it ain't going to be me. That goes in there. Next to go in would be that. We don't put that in here because what goes up will come down. I'm going to be shooting out over that way, folks, so we don't want that popping down on your heads. So that would go in now, but not. Next, we need a little bit of wadding. I'm just going to use some tissue paper. Back then they would have used paper, maybe cloth, bark from a tree, dried horse dung, anything. Roll it up. Put it in. Jeez. That's not going to go in. Don't worry, I shall ram it down using the rod. This is called a ram rod. It goes in like that. Now you will notice that it's attached to the weapon. Reason for that, if I'm on top of a horse riding along, that's not attached, it falls. I got to stop that horse, I got to get off, look around for that. Time, effort is wasted. I lose that ramrod, this is no longer a musket. Because I can't get all that down the bottom there. Basically all I can do is hit people with this. Because as a musket, useless. That teeny tiny thing there, that is called a top hat percussion cap. That is going to go on the nipple at the end of the breech, right there. Just like that. This weapon is now ready to be fired. What's going to happen when I'm going to arm the weapon? I pull back the hammer to fire. I will pull that trigger. Hammer's going to snap back, hitting the percussion cap. Release the spark down the tube. It's going to ignite the powder and it's going to go boom. You're going to have to stick your fingers in your ears, everybody. And if you've got little ones with you, make sure their ears is covered. Otherwise, they're going to be screaming and crying. Ladies and gentlemen in Ballarat, weapon is about to be fired. Place your fingers in your ears. The weapon is armed. We are firing in 3, 2, 1. Now that's how you load and fire a musket. Are there any questions? मम्मी देखो नाशपाती नाशपाती नहीं नहीं नाशपाती नहीं है नाशपाती तो लग रही है नहीं 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 नाशपाती नहीं है कोई और फ्रूट है नहीं मम्मी ने तो अचार ही डाल मम्मी ने आज सारे अचार डाल देने मम्मी क्या चीज़ है पापा देखो क्या चीज़ है ये नहीं नहीं इतना सुंदर प्लेग्राउंड हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है और लेक देखो कितनी सुंदर है बड़ी जगह देखो बच्चों का प्लेग्राउंड
पहले खा लेते। अभी यहाँ तो आएगी। और अब हम खा रहे हैं आलू गोभी सब्जी और मिर्च और गाजर का अचार और ये थोड़े। पीछे मेरे लेक है और इस तरफ बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है और यहाँ सामने बैठ के हम सब लोगों ने खाना खाया है। इधर से चढ़ते कहाँ आ जाओ, ढोल वाले की खींचते। तो मम्मी बैठ चुकी है रथ में, सवारी निकल गई है, दूसरी मम्मी आ रही है। मम्मी चलो पहुंचो आप भी। बहुत ही सुंदर जगह है। घोड़े एकदम तैयार हैं। हिलेगा और क्या, वो तैयार हो रहा है ना, देखो घोड़ा हिल रहा है। ज्यादा वो करते हैं, कोई क्या थोड़ी सकता है, क्या चीज इसमें नहीं है, सब चीजें। ये जो है ना, ये इतना वजन है। उधर देखना जरा, इधर 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 पीछे क्या कर रहे हो मम्मी? इधर भी आपने देखा कुछ फीमेल्स घूम रही है ना ड्रेसेस पहन के, तो ये मेरे ख्याल से इनके जो पहले ऐसी ड्रेसेस वगैरह पहनते होंगे ना। और देखो नीचे से जाएंगे ना वो ऊपर तक। और ये देखो लाइन कितनी बड़ी लगी है वही टांगे के लिए। मम्मी पापा मम्मी वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक बाय। और मैं लगी हूँ लाइन में, धूप बहुत गंदी हो रही है। You're very pretty. Thank you so much. हम तो टांगे में बैठ गए हैं। घोड़ा गाड़ी में ज्यादा हो गया नहीं, घोड़ा गाड़ी में बैठ। बग्गी तो भैंस वाली होती है। बग्गी भैंस नहीं, ये तांगा है। ये तांगा है, तांगा है। हाँ, नहीं नहीं इसको तांगा बोलते हैं। नो बेटू, घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं। घोड़ा गाड़ी बोल दो। नो 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 नो, कौन चीज है? ये देखो मम्मी वो बैठे नीचे, वो देखो मम्मी दिख रहा है, ये सारे लोग बैठे हैं, देखो छान रहे हैं। हम लोग भी चलेंगे। वो देखो देखो कितने हैं, सोना सोना हमें भी मिले। वो देखो देखो पापा कितने सारे हैं। यही चल के जाना भी जनाब से बाइक। अरे पोस्ट ऑफिस। तो तांगे की सवारी हमारी हो गई है। यहाँ से तो बंद है,
बंद लगा भी देना वहाँ पे चलने का है चल तो नहीं पाओगे 45 मिनट 45 मिनट का है वो अरे चलने के लिए रेडी हो तो चलो वो दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या था। माइनिंग करते तो मेरे तोड़ के निकलता ना पत्थर ऊपर से मम्मी देखो गोल्ड है ये देखो ये सारा गोल्ड है ये सारा गोल्ड है हाँ अच्छा इसमें भरा हुआ I'm smiling too, it's just I'm wearing this. हम इधर पहुंच गए ये क्या फंसा बता नहीं Hello. How are you? Good. How are you? Where are we all from? Melbourne? It's beautiful. From Melbourne? Yes. Good to see you, welcome. It is, we have some nice stuff in here. The solid gold is behind you. Yeah. Everyone loves gold. And they're just kind of cute. There's nothing really precious about them. The chains are sterling silver. Yeah. But she's a potter who decided to experiment with 2 sheets of glass and a little bit of gold leaf. So Still beautiful. Yeah. Yeah. They're just kind of gorgeous. हाँ Those ये are ना अंदर simply stainless steel, triple plate, 22 carat. नहीं नहीं मम्मी नहीं आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए Order up! Advance up! Shoulder up! Tremor! Stand fast! Current 21 pace forward! March! Put out! Fingers in your ears! No. Time sequence from the They have earplugs. Sonny, fingers in your ear, quickly. Number 1! Oh. Oh. अब हम जा रहे हैं ना मम्मी इसके अंदर जा रहे हैं अभी तो बीच में आ गए ना हम तो वो जो हम उसमें गए नहीं है अभी तक किसमें जो अंदर है ठीक है अंदर अब हम जा रहे हैं अंदर और अब देखेंगे हम लोग की ना गोल्ड कैसे बनता है और यहाँ पर हम लोग बैठेंगे आराम से और फिर देखेंगे नहीं लगता वो अच्छा नहीं कौन सा वो मेरा शायद मेरा नया वाला है ना in that quartz. Small pieces, but mostly gold powder.
And that led to our third and final stage of mining, which is called quartz mining. That is carried out by very large mining companies, requiring a very bad accident. I will be splashing it away from myself. So I can now allow everybody to know who is in the second and the third row that they are entirely safe if I have an accident, because by the time that 1200 degrees of liquid gold passes through the person in the front row, it will be solid when it comes out the back of that person, and it will then only bounce off those people in the second and the third row. Racing in and getting a front seat, folks. That wasn't such a good idea after all, was it? Now, if you do wish to take a photograph of that happening, please have your cameras ready, because I'll only have a 16-second window to pour the gold in front of you. That's happened really quick. So we'll be looking for a slight colour change in the gold so that I reach that optimum temperature. If I take it out too early, it is not liquid enough to pour. If I'm 10 seconds too late, I will have burnt the gold. So gold is an amazing conductor of heat. If given a reason, it can lose that heat very quickly. 1200 degrees, as I said, that allows me enough time to carry it over to the table and pour it into the mould in front of you. A lot of that heat is now transferring out through the bottom of the mould into the top of the table. So I'm very sure I'm going to take off Adults don't normally put their hands up. I'll show you why you can't do that, because at 900 degrees, it instantly ignites a piece of timber on contact. That's not going to happen. That gold is now going to take 2.5 hours to cool naturally, just sitting there. Oh, I love gold that much. I've got 2.5 hours to stand here and watch that happen. What, you don't have 2.5 hours to sit there and watch that happen? Really? Did you just miss that moment where I poured liquid gold? I don't know why I bothered half the time. It's like gold soup, right? I guess I can speed up that. Gold soup, right? I can speed up that cooling process, and you know why? So I can get you out of my room. There you go, folks. 100 troy ounces of pure 99.99% gold. Wow. 24 carat gold that has now been smelt or purified. सोना ही सोना होगा, सोना ही सोना. कितना सोना चाहिए? जो ये दे दें तो दे दें। सोना ही सोना. सारा मम्मी सोना ही. हाँ मम्मी ने भी आना है, आ जाओ. सोना ही सोना. ये तो देख गई नहीं है। हाँ वही सेम, वही है, वही है.
और ये देखो पानी कहाँ से ऊपर से आ रहा है। वही निकाल सकता है, हर कोई नहीं। अरे बना रही ना तो ये देख रही। ऐसे निकलने लगा ना। मैं चावल से पीसते नहीं। मम्मी तो चावल पीस रही हैं। कितना मोटा थोड़ी ऐसे नहीं होता मम्मी, हैं? ऐसे नहीं होता है। ये कैसे तो बहुत बारीक, बहुत बारीक होगा, पता भी नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा इतना मोटा। टिकी, टिक टिक, इधर देखो। टिकी, ठीक है मम्मा क्या करें, ठीक है ना। ये भी सोना निकालेगा, हाथ में जाके सीधे निकालेगा। मम्मी आराम से, बहुत छोटा होता है ना गोल्ड, इतना बड़ा नहीं मिलेगा। सब ने तो देख लिया बस। छोटा अलग भी दिखते है क्या? कौन सा? नहीं निकालो मम्मी, ढूंढो, देखो सब लगे पड़े हैं। पापा ढूंढो, आ जाओ। पापा कहाँ जा रहे हैं? ये फैंसा हो गया। मिला कुछ? मिला गोल्ड? एकदम में काम मिल जाएगा। देखो मम्मी सारे बैठे हुए हैं गोल्ड के लिए। चल गई हैं मम्मी, निकला। एक बार में भी। अब दूसरी मम्मी भी बैठ चुकी हैं गोल्ड निकालने में। मम्मी आराम से बैठ के निकलेगा, बैठ जाओ। ये तो है ना गिल्ला, इधर बैठे। किधर? तो ये सारे के सारे लगे हुए हैं गोल्ड ढूंढने में। देखो किसको मिलता है। मम्मी लग जाओ। हाँ तो पापा मना कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। नहीं नाला तोड़ना है मुझे। नाने के लिए रेडी हो रहा है। मिला मम्मी? और ये है यहाँ पर गिफ्ट शॉप। तो मैं अंदर जाके देखती हूँ क्या होगा। वैसे तो मैं जहाँ पे गिफ्ट शॉप होती है वहाँ चली जाती हूँ, पर मैंने सोचा जब इतनी दूर आई हूँ तो एक तो बनता ही है। Yes, this one. Want to take this one? Yes, please. This one. This one. Yeah. क्या खा रहे हो? गिर गया, गिर गया, गिर गया। चुप। अब नहीं। बस हो गया। हटा दो ना। मम्मी कौन से खा रही है? मैंगो। पापा खा रहे हैं। तो पीछे देखो म्यूजिक की आवाज़ आ रही है ना, तो सब लोग अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। इधर मम्मी। मम्मी कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक लगा? कुछ गोल्ड मिला? गोल्ड नहीं मिला, बहुत देखा हमने। मम्मी और दोनों मम्मियाँ तो ऐसे बैठी हुई थी छन्नियाँ लेके। लोगों को बहुत मिला। मिला? हाँ। असली में? हाँ, शीशी में ऐसे डाल। हाँ? अरे सबको मिला।
दो को देखा मैंने। बेटा सीसी में डाल दें वो अपने घर से शीशी लाए। मैं तो आज तक नहीं बैठी छानने में, तो आप लोगों को बिठाया। नहीं पता नहीं चलना कैसे होता। और वो सीसी पता है क्या था, हम पत्थरों में ढूंढ रहे हैं ना, पत्थरों में नहीं है, रेता में पानी में। देखो पानी में ऐसे पानी में आ रहा है उनको पास। हाँ पानी में। हाँ हम तो ऐसे पत्थरों में ढूंढ रहे हैं। दोनों मम्मियाँ बता रही हैं कि कई लोगों को यहाँ पर काफ़ी गोल्ड मिला है। मैंने तो कभी नहीं ढूंढा, लेकिन मम्मियों को बिल्कुल नहीं मिला है। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़े करे हम सब ने। तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ। मम्मी सबको बाय कर दो, बाय बाय कर दो मम्मी सबको, बाय। पापा बाय कर दो, बाय। बाय कर दो। चलो आप सबसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।